Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to recommend a show which I recently saw on Hotstar. ये एक ऐसा शो है जो मेरे लिए 11 on 10 था. It was totally impeccable. मैंने loosely streams में भी इसके बारे में बात की and today I want to recommend that show to you guys. So the show that I'm talking about, it is called Barry. Barry is a show which is created by Bill Hader and Alec Burke. Bill Hader is the guy who has directed the show at multiple places, who has also written the show, and who is also the lead actor in this show. So let me give you the synopsis of this show in one line. This show is about a guy called Barry, who is an assassin who murders people for money, but he wants to pursue his dream to become an actor. This is the one-liner. ये पूरा basically episode number 1 का plot है. When you see कि ये बंदा जो एक day job करता है, which is to kill people, suddenly lands up at a place where he realizes ki, hey, this is something very fascinated, or like someone tells him ki maybe you are a good actor, and he realizes that after a very long time someone is telling him ki, hey man, I'm good at something and that this is something I can be good at. So this show is about him balancing his assassin life with the thing that he wants to pursue. In a way, it's like anti Better Call Saul, because in Better Call Saul he is going from the normal day job towards something bad and bad. Here it is the opposite. He has a normal day job and he's going to pursue something which is more socially acceptable. So it's a very very funny show. But like हमारा जो चलचित्र मूवी क्लब है पेट्रन्स के लिए व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा था. मैंने सबको बोला था इट्स सच अ ग्रेट शो. मैंने 3 एपिसोड देखे. सच अ फनी शो. आई वांट टू अपोलोजाइज टू दोज पीपल, क्योंकि मैंने उनको वहाँ पे भी टेक्स्ट पे भी अपोलोजाइज किया था. इट्स a funny show, but it's not a comedy show. The show has a very finely balanced treatment of drama and comedy, and धीरे धीरे ड्रामा एलिमेंट बढ़ता जाता है. सम पार्ट्स आर वेरी वेरी डार्क. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गन शॉट्स जब मूवीज में दिखाते हैं, this is for the first time in my life I've seen gunshots portrayed so accurately. The scenes where the rifle is being shot or the pistol is being fired, like I have never seen the sound design to be so perfect. And a lot of people commented कि जब action scenes आएंगे they wouldn't be that great, but hey, HBO never disappoints, and those scenes were very very finely directed, and I'll tell you the reason for that. 5 or 6 episodes of Barry are directed by this brilliant filmmaker whose name is Hiro Murai. Hiro Murai is the guy who has directed a lot of music videos. This is America, जो Donald Glover का music video है. It's also directed by Hiro Murai. And the Atlanta, which is the show starring Donald Glover, it's also directed by Hiro Murai. Season 2 episode 1 जब मैंने देखा था, I'm like, who has directed this? And I'm like, last में जब भी मैं Hiro Murai का नाम देखता था ना, I was like, hey, Hiro Murai is like doing all this. मैं direction बहुत note करता हूँ in general in life. So another interesting point about direction, Bill Hader, the guy himself, the creator, the actor, the writer, has directed a lot of episodes in this show. There is this episode called Ronnie/Lily. Holy shit, like it's like the Pine Barrens episode of this. Pine Barrens जो Sopranos make episode था, which is one of the most highly rated shows of Sopranos. This is that episode for Barry. Like the complete episode is about a murder going wrong, and like the lethargy and the exhaustion which comes after killing people. Like जो अनुराग कश्यप भी अपनी मूवीज में बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं. चेजेस जो होती है लेकिन सामने वाला थक गया तो उसको लात मार रहा है, वो थक गया. सो ये चीजें इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई थी. आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग बिहाइंड द सीन्स like segments and clippings of this show. It was such a fun to like see Bill Hader and like the way he was talking about it, because I wasn't like very well exposed to his work. So this was my first ever insight into his work, and I was like quite impressed by it. There is this villainish guy in this show जिनका नाम होता है Noho Hank. He is like the biggest standout performance in the show. You will root for him like anything. He is like a villain, but like a very lovable villain. बहुत ही अच्छे सीन्स है उनके, एंड लाइक जो उनका ह्यूमर है हमेशा इतना ऑन पॉइंट होता है. लाइक ही डिजर्व्स अ स्पिन ऑफ सीरीज ऑफ हिज ओन. Let's talk about the acting part of this show, because this guy starts going to an acting school, like theater करने लग जाता है. Not a school per se, but like एक acting teacher होते हैं उनके under he starts working. So I don't know how many of you guys know, but there is this method called the Stanislavski method. Stanislavski method होता है एक acting का method होता है, बहुत actors apply करते हैं, कुछ नहीं करते. It's like a method where you use your past memories to bring in emotions for the current scene that you're doing. Let's say मेरी लाइफ में 8 साल की उम्र में कुछ हुआ था और वो उसके मतलब बहुत ट्रॉमा है, मेरे को जब भी मैं याद करता हूँ रोना आ जाता है.
तो जब भी आपको कोई सीन करना है जिसमें आपको रोना है, सो यू रिमेंबर दोस लाइक थिंग्स जो आपकी 8 साल की उम्र में हुआ था। ये एक्टिंग स्कूल में सिखाई जाती है टेक्निक। स्टानिस्लावस्की के बाद दिस वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड बाय ली स्ट्रासबर्ग एंड देन इवेंचुअली स्टेला एडलर, और सबके अपने अपने स्कूल्स है, बट मोटा मोटा लाइक दीज पीपल डू दैट। सो इस शो में भी ये होता है कि दीज पीपल आर टॉट कि अपने पुरानी मेमोरीज याद करो। एक बहुत ही जैसे डार्क चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा स्पॉइलर है, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। वेयर वन ऑफ द गाइज डाई इन दी फर्स्ट लाइक फ्यू एपिसोड्स इटसेल्फ, जो उन एक्टिंग स्कूल में आता था। एंड द एक्टिंग टीचर अपने बच्चों को बोलते हैं दैट पर्सन हैज डाइड एंड या आई नो वी आर ऑल सैड बट ट्राई टू process it, try to use it for your art. And I was like, this is so dark because people do it. मतलब आप ह्यूमन एलिमेंट तो रिड्यूस ही, आपने पूरा का पूरा लाइक डिलीट ही कर दिया ना इस चीज़ से कि आपका एक दोस्त मरा है ना, आप उसको कह रहे हो आप अपने आर्ट में यूज़ करो। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। इट वॉज वेरी फक्ड अप, बट दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ टीचर्स टेल यू टू डू दीज थिंग्स। द गाय हु हैज प्लेड द रोल ऑफ जीन होता है उनका नाम, जिन्होंने एक्टिंग टीचर का रोल प्ले किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द शो। यू विल स्टार्ट लाइकिंग हिम मोर एंड मोर आफ्टर एवरी एपिसोड। ही इज जस्ट लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देर इज दिस वुमेन जिन्होंने सैली का रोल प्ले किया है, उनका आई थिंक नाम है सारा गोल्डबर्ग। शी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन दिस शो। आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से परसीव करोगे उनको, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट वाचिंग हर एक्ट यू विल बी लाइक कि शी माइट नॉट बी दैट गुड ऑफ अ पर्सन, और वो आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा कि हर पर्सनालिटी, बट इवेंचुअली यू विल नेवर हेट हर एज मच एज, मतलब बहुत स्मार्टली लिखा गया उनके कैरेक्टर को, क्योंकि यू सी दी ह्यूमन साइड हर है ना ऑल्सो। उनका एक सेकेंड सीजन में एक मोनोलॉग आता है वेयर लाइक सम वन गेट्स अ रोल और एन ऑडिशन दैट लाइक उनको खुद नहीं मिल पाता है, and उनको एक बहुत strong monologue है, and I was like holy shit, she's such a good actor. So it's a very good blend of two different universes. I would strongly recommend it. मेरे को कोई भी चीज़ इस शो में वीक नहीं लगी, और like HBO के साथ like मेरा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहा है। So do watch Barry यार, मैं और भी इसके बारे में एक ढंग से स्ट्रीम पे बातें करूंगा। There are so many other elements also in the show. One thing जो मेरे को नहीं पता था when I was watching this show, मेरे को लगा ये सिर्फ 2 सीजन का शो है, but the way it ends, like I can't like wait for season 3 because और मेरे को पता चला 2 साल से नहीं आया because of COVID, उनका डिले हो जा रहा है। So I am kind of happy also because अब season 3 आने वाला है। There is more to it because the show is so good, and all hail Bill Hader because he was perfect in the show in every department. You watch Ronnie and Lily and you will be like holy shit, this is good stuff. So this was my recommendation for the week, Barry on Hotstar. Do watch it. Do let me know what you think of it. Do tell me आपको मेरा नया background कैसा लगा. I keep experimenting with it क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, so I tried to use that light on my face. And keep watching Chalchitra Talks. Our now next goal is to achieve 1 lakh subscribers as soon as possible. हमारे अभी भी 40% लोग जो हमारा channel देखते हैं उन्होंने subscribe नहीं किया हुआ. So अगर आप कर लेंगे, like you will realize कि we will just reach closer to our dream of getting 1 lakh subscribers. And if you like our work, become a patron. We are about to hit 100 patrons now, और हमारे जो टॉप टियर patrons हैं उनको हम एक्सेस देते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आने का, हमारे साथ स्ट्रीम्स पे आने का। मैंने अभी हमारे patrons के साथ एक संडे को कॉल की थी मैंने और वानी ने, where we just discuss stuff. It's beautiful like how we get to talk to our patrons and like do fun stuff with them. So yeah guys, do stay safe and stay at home, and we will see you tonight or tomorrow because we are doing a lot of streams also, a lot of uploads also. तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगा. This was it for this episode. Bye.